I'm asking that how China imposed anti-dumping duties and US also imposed sudden tariffs. And our leadership speaks about some positive and negative thing. How do you think how it should go towards the changing global affairs?
sometimes President is taking the president of Venezuela. You see a sort of peculiar atmosphere as long as President Trump is concerned. These things happen. So we have to adopt a balance and once and not trust the United States. Any more questions? Or we get out of the session, there are some more questions. आपने बताया सिटी क्लोजर में जो चाइना है उसमें बहुत सारे हमारे पास जो चौक पॉइंट्स हैं जिसपे हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं क्या इस चौक पॉइंट के थ्रू हम जो चाइना का प्रॉक्सी वार है अरुणाचल प्रदेश को लेकर और चिकन पॉइंट को लेकर क्या हम इसका प्रयोग वहां कर सकते हैं? नहीं, I didn't say that we can counter China through choke points. See, we have to consider, we have to see China's legacy policies in Iran, Arunachal Pradesh, South China, Vietnam, Malaysia. It has got that few disputes that I mentioned. ये सब है उसका. South China Sea उसका expansion है. But what I'm arguing is that this area, this Indo-Pacific has got important choke points. And we have to maintain relationship with those countries like Iran's oil developers. Iran has allowed our ships to come because we have got better ties and Iran has through harbors our oil is serving our tanker. Even the Chopra state of Malacca, we went India, Indian Prime Minister went to Indonesia. Malaysia, why? Because we are looking at other points also. If China is blocking something, that is number point we're talking in the Malacca state, there are other points also. See, all the trades, 80% of India's oil is coming from these choke points. From West Asia and also from Russia. So, Indo-Pacific region or our Indian Ocean Sea. That's why we said India's position is very strategic as far as the sea waves of communication is concerned. इसी तेल में सब आपका तेल आ रहा है रक्षा से हो या स्टेशन तो हम लोग इसी पोजीशन में हैं जहां पर we can have a good relationship with those countries and our choke points may not be a threat. That is, these choke points may not be a threat to India's to the trade and commerce and oil supply because oil supply is now major. So we have to contain, that is not a counter. You have to contain China. Countering China means contain China. So our relationship दूसरे nation से भी अच्छा रखते हैं so that we can have this choke points free. We can have it in that is a free flow of trade, commerce, commercial activities can go. इसलिए India anti-piracy में भी lot of security है. Maritime security. India is giving a lot of stress on maritime security, anti-smuggling, anti-piracy. Is supporting, giving a lot of support in these regions. Which is why we have surveillance, that is cyber security surveillance. It has established, we can say, surveillance in all many of these areas, from Africa to the West, that is Southeast Asian countries. Okay. बिहार में अभी तो ऐसे इतनी ताकत जो चाइना के राष्ट्रपति है सब ये ठीक है क्या? किसी कंट्री के राष्ट्रपति को क्या इस तरीके से? Yes, that is what we are saying that United States and particularly Trump, they are not following any laws. United Nations laws. That's what we said. China also is not following any laws of the seas. Laws of the seas protect laws and to like this become a world where mind is young. That is what they are trying to propagate. And that is where we have to see how India is trying to manage this. Because we are in a world where we are using force. Our force करें, डराएं, धमकाएं किसी देश को आप अपना पावर से धमका रहे हैं. India has never done किसी को धमकाने का strategy में कभी नहीं किया. That is why India is seeing more with trusted eyes. China Africa में आपने investment कर दिया. अब जब Africa payment नहीं कर रहा, उनका land ले रहा है. हमारे को क्या आपका श्रीलंका में है. हम it gave huge aid to Sri Lanka. जब Sri Lanka aid could cannot be returned. Now just looking at these 9 years, these related. So what you see, it has got a big pocket, long pocket. उसी से आपको वो aid देना है. जब आप उसका aid नहीं रिटर्न करता आपने तो land ले रहा है. आपका territory कब्जा कर. So these are policies for China and United States is also following. Nobody is yes, United States is also under Trump is following no laws.
imagination was किसी को जाकर अटैक करना, गोली करना, और unprincipled as far as laws are concerned, human laws are concerned. कुछ तक balance होना चाहिए as far as your policies are concerned. You don't respect them, how do you? Understand? So I think that's what we said. What Madam highlighted that it is about so much of conflict. So there's so much of turmoil. There's so much of, you can say, chaos. And at the same time, there's also a growing interdependence amongst nations, economic interdependence. देखो this China is racing, trying to make star weapons, missiles of the sky, missiles of the pure weapon chasing. So what is our there? We should really keeping our self-interest also. Any more questions? We now move forward to the second keynote address of our national conference. It is my privilege to introduce Professor Anidi Tiwari, sir. Sir is an eminent mathematician and an experienced scholar of English language and literature with having 37 years of teaching experience and 20 years of research experience. Tiwari sir has served an important academic and administrative positions. He served as a professor and head of the Department of English and European Languages. Also, he was the former registrar of Rosas Vidyadhara School. He was the professor and dean faculty of arts and head of the Department of English and Indra Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Kerala. Sir will be delivering a keynote address on narrating India's neighborhood, discourse, identity, and the politics of reciprocal relations. Sir, we are truly honored by your presence. I request Professor Tiwari sir to deliver his keynote address. Thank you for introducing me. I feel blessed to be here. Honestly, scholars of support like congratulations on the Islam and Madam Vice President of the Marine Agencies, the scholars and students. We have a Professor Seema has spoken extensively on the different aspects of India's international policy. And Madam has also made it very clear what the conference is about and how we should move forward. In fact, you had initiated the whole seminar and set the line on which we should move forward. Having said all that, I must thank Dr. Sabha for organizing such a beautiful conference and bringing the scholars from different part of the country who have spoken and will be speaking on different aspects of the topic. Very few of us know that Dr. Sabha has done his PhD on the literature of South Burmese. And the topic that we had chosen was very interesting.
That was the topic that one always James, the topic of the conference. He chose different concepts from the South countries, especially from Pakistan, India, Bangladesh, Japan, and Sri Lanka. I will try to find out how the literature of this country, in fact, we have chosen literature that is written in English only, not the local literature. And that was good in a way because choosing particular novels from these countries and then trying to trace on how do they fight for their identities and what is common amongst all these countries and how all this sets the foreign policies of these countries. How do we visualize us as a nation and as a part of a particular area? Having said that, I would say that I have chosen a very difficult topic. That deals with a very untraditional aspects. Sorry, I'm taking some time. I'm not very good at computers. And we doing it in my computer, then you can move on the slides. Yeah, already. Narrating India's never discourse identity and the critics of regional relations. Now, narratives are very important in the common to the international relationship because every country has its own narrative and will follow their own narrative. Narratives are not good or bad because narratives are always constructive. You can construct the narrative that suits your history and the kind of future you vision, what kind of country you want in the future. So narratives are all about that. India also has its own narrative that is very old. How do you visualize India now? There are two ways of looking at this concept. India. Some people say that India was another political entity. But there is a group of people who always say that now India was always there, but we could not look at that India, which has always been there. So we have our own narrative, we have our own story. Now, how old is India's narrative? I have made just a survey, quick survey, that is it starts all with the regulator. Where regulator says that Mata Bhumi Putro Vidya. And this is our motherland, and we honor the son of this motherland. This is how this story of India starts. And it continues to come to Mahabharata. There you have reference to that again, where it says that there are many nations. They may be good, but India is the only true land where Dharma is followed. Dharma here refers to righteousness
that is the duty, that part of it. But India is a nation where duty is more important than anything else. So you find that we start with the Rigveda and we have the depiction of Bharat in Mahabharata also. And then if you just read that down here for colonial region, that is the Muslim region and the Mughal region, to come to like the British period when period in which we were colonized by the British. There also that narration, that narrative continues, although there is a gap, but it always lingered and lived in the memory of Indians. We never forgot that Hindustan is India, India is Bharat. So that concept of Bharat continues, where we have Anandamat, I'm sorry, Anandamat, और अभी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे याद है उसकी के लिए हमें बात करते हुए उस पर चर्चा हुई पार्लियामेंट में that was taken from Anand that famous from Gandhi Mahatma. So that story continues, and then if you come further, you find that the story is being emphasized in the form of Ramraj और कैसा रामराज जहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, जहाँ पर हर आदमी को अपना हक मिलता है, जो कि एक vibrant democracy. And then we come to the Indian Constitution, where the framework is India, that is Bharat. So what we visualize is that India is a timeless civilization. And we always remember that India as a narrative has its own aspect. And howsoever, we deal with in whatever manner we deal with our neighbors or with the world, our own principle is the same. Vasudhaiva Kutumbakam. We always remember that. Now, there has been, remember this narrative that India that is Bharat, and we the people of India that is Bharat. But there has been a lot of policy shifts after the partition. In fact, this story starts much before that, from the 1800 something, when the cartography started. मैप जिसे आप कहते हैं उसमें जो विज्ञान होता है जिसमें देशों को बांटने के लिए मैप का सहारा लिया जाता है वहां से स्टोरी शुरू होती है पर मोटे तौर से अगर देखा जाए तो इतिहास फॉरेन पॉलिसी has passed through three stages. What Manipur has very nicely depicted. That is possibly Nehruvian idealism, and that was good also because we had won our freedom struggle, we have achieved the freedom with certain principles, which were of course almost unlimited. That somebody says that I will win the freedom with the principles of non-violence, although that is a debatable issue. How far it was non-violent. मुझे ऐसा लगता है कि non-violence के नाम पर जितने लोग मारे गए, violence के नाम पर शायद उतने लोग नहीं मरे. Although it is true that it was the longest struggle of freedom movement. दुनिया में कितना बड़ा 1857 से लेकर 1947 तक इतनी लंबी लड़ाई फ्रीडम मूवमेंट के लिए किसी ने नहीं लड़ा. और फिर ये नेगेटिव बना कि हमने ये आज़ादी मिला, भारत में आधार पार्टी, ये आपको सोचने का विषय है. क्या ये आज़ादी आपको भारत को आधार दी है? लेकिन उसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो यही है that although non-violence, complete non-violence,
is unachievable, it should be given weightage because it serves the cause of humanity. In fact, मेरा तो ये मानना है कि non-violence का जो principle है, वो individually you can practice that, but collectively as a nation that is not practicing, can't be practicing. और इस पर मुझे याद आता है जब फर्स्ट अटैक इंडिया पर हुआ था 1947 के बाद, तो नेहरू जी खुद गांधी जी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या करना चाहिए, कश्मीर पर तो मैं क्यों गया, आप नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो आप बताइए हमें कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी ने जवाब दिया आपको अब आप स्ट्रगल नहीं करते हैं, हमारा सॉवरेन नेशन की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो करना है वो कीजिए और फिर इसके बाद आप जानते हैं आगे की पॉलिसी। तो एक तो नेहरू जी का जमाना था जिसमें एनिमिज्म की बात की जाती थी, इसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं और उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी थे। नेहरू जी इंडिया को एक ऐसे मुल्क के रूप में पेश करना चाहते थे जो एक आइडियलिस्टिक है और जिसके अपने कोर प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीजें उसमें थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो मोर और लेस इंडिया आज भी वही कर रहा है कि हम अपने को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि जैसा हमारी प्रवृत्ति होता है कि हम एज ए नेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में दयाल नहीं हो सकते, इंडिया आपको वो करना है जो आपके नेशन के हित में है। अभी मैं मैडम से बता रहा था आज का स्टेटमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट का है, उन्होंने अपने देशवासियों से पूछा है कि हार्मोन्स अमेरिका का पार्ट ठीक है नहीं, स्टेट ऑफ हार्मोन्स अमेरिका को ले लेना चाहिए। सोचिए हाइट ऑफ नॉनसेंस, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जो कि इम्पॉसिबल। तो उनसे तो हम कहते ही हैं कि हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं और हम इस बने रहना चाहते हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा सपना है। और वो जो कंस्टिट्यूशन की बात होती है और ढेर सारी बातें होती हैं, इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है, नॉन इंटरफेरेंस की बात होती है, लेकिन ये चीजें ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। उस दौरान कुछ स्ट्रेटेजी भूले भी थी, जैसे जब चाइना को रिकॉग्नाइज करने की बात आई तो इंडिया वाज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज चाइना। इसी तरह से जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो इंडिया वाज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द सॉवरेनिटी ऑफ चाइना ओवर तिब्बत। लेकिन तब तक नेहरू जी की समझ में आ रहा था कि देश ऐसे अन्य इंटरनेशनल पॉलिसीज को मैनेज नहीं कर सकते। तो नतीजा क्या हुआ, दलाई लामा 1959 के आसपास उन्होंने शरण दे दी। फिर उसके और भी नतीजे है, 62 की बात होती है, वहाँ आप देखते हैं हिंदुस्तान के साथ क्या होता है। फिर इसके बाद जो पॉलिसी का इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है इंडिया में, उसमें बहुत फर्क पाया जाता है और एक जो हमारी मैडम ने बताया कि एक रियलिस्टिक पॉलिसी को फॉलो करने की बात उसमें चलती है। तो इंडिया और चाइना की जो लड़ाई थी, इंडिया के पास एक ऑप्शन यही था कि इंडिया नहीं लड़ता, लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया कि हमको लड़ना है और पहली बार हिंदुस्तान ने ये दिखाया कि हम अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ सकते हैं और हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से एसेंशियल एस्पेक्ट हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी का, हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस का ये शुरू होता है। अब भी एक लंबी कहानी है, आप देखते हैं कैसे होता है। इंदिरा जी आती है और बांग्लादेश वो एक वीक पॉइंट था तो लेते हैं कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान मदद करता है और एक नए नेशन का जन्म होता है। तो
ये बहुत लंबी जर्नी है फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश। ये असर्टिव के साथ आ जाता है। और फिर एक इसके बाद एक स्टेज ये आता है जब रीजनलिज्म और रिकंसिलिएशन की बात होती है पहले पीरियड फ्रॉम 1985 टू 1998। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें शिफ्ट आता है हमारे फॉरेन पॉलिसी में वो आता है जब 1991 में मनमोहन जी चंद्रशेखर राव जी रहते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसके बाद मनमोहन जी को जब वो वित्त मंत्री बनाते हैं इसके बाद सारी चीजें बदल जाती हैं। एलपीजी से हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमको बड़े ध्यान से इस चीज को देखना है कि ये जो 1991 का टाइम था इसमें केवल हमारी फॉरेन पॉलिसी के मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं बदली, हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है। और वहीं से जो मल्टीपोलर ये जो मल्टीलेटरलिज्म जिसे कहते हैं उस टाइप की बात हिंदुस्तान में आती है और उसको हम फॉलो करना शुरू करते हैं। फिर न्यूक्लियर इरान आ जाता है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कैसे होड़ लगती है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की। और एक ये लंबी कहानी चलती है। हमारा जो फोकस है ये आज का जनरेशन का जो मैंने बैकग्राउंड बता ही रहा हूँ ये है कि कैसे ये फॉरेन पॉलिसी का इशू नहीं हो सकता। और एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर जो मैं देखता हूँ उसके हिसाब से करना है प्रोबेबली नहीं है ऐसा एक्सपर्ट को जो नॉन एक्सपर्ट जिसे आप कह सकते हैं जिसका कोर्स सब्जेक्ट वो नहीं है। तो हमने पूरी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है और जो हो रहा है उसको एक दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश की है। ये चीजें हमारी आइडेंटिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। How do we make our identity as a nation